Hello children, this side Ma'am Varsha. Once again welcome you to your geography classes. This is the lecture 2 of lesson 1, India, size and location. In the previous video you have learnt about the India's size and its location. Okay. In this video we learn the next topic, India and the world. तो बच्चों जो इंडिया की लोकेशन है ना वो बहुत अच्छी है ना, वो बिल्कुल एशिया के बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है. ओके चिल्ड्रन, सो सी इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. ओके, उससे बहुत बेनिफिशियल है. अगर हम इसकी ओशंस की और सी कोस्ट लाइन की बात करें तो द रूट्स अक्रॉस द इंडियन ओशन which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location to India. Okay, it is located in the middle, so that is why it has a good relation between the ईस्ट और द वेस्ट है ना. अगर हम इंडियन ओशियंस की बात करें तो सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है बच्चों वो इंडिया की है. ओके, द थर्ड मेन फीचर इज दैट द डेक्कन पेनिनसुला. द डेक्कन पेनिनसुला हेल्प्स इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट with West Asia, Africa and Europe from the western coast and the southeast and East Asia from the eastern coast. तो बच्चों जो ये ईस्टर्न कोस्ट है ना, इसके कारण जो बहुत बड़ी बड़ी एशियन कंट्रीज़ है उससे हम कनेक्टेड रहते हैं. और इतना ही नहीं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की जो शिप्स हैं उनको इन कोस्टल एरिया से ही, इस कोस्टल लाइन से ही गुज़रना पड़ता है. सो इट हेल्प्स अस टू क्रिएट गुड रिलेशन, good trade relation with these countries. The Indian Ocean, which is the south of India, given name Indian Ocean as no other country has a long coastline on the Indian Oceans as India has. बच्चों सबसे बड़ी जो कोस्टल लाइन है वो इंडियन ओशियन में इंडिया की है. बच्चों जो भारत का कॉन्टेक्ट रहा है ना, इंडियाज़ contact with the world have continued through ages है ना, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. The means यानी जो land routes जो है बच्चों वो these relations are older than the maritimes relationship पानी के ज़रिए. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient traveler, while the oceans restricted such interaction for a long time. Okay बच्चों, not only this, even these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. इन्हीं जरिए से जो हमारे देश की जो बच्चों हम जैसे मसाले की बात करें या कुछ जेम्स वगैरह है या अदर ऑब्जेक्ट्स, दे यूज टू import and they used to export through these routes. Not even this, even the ideas of the Upanishads and the Ramayana, the story of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system also could reach many parts of the world in this way. The spices and other merchandise were taken from India to different countries. On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural styles of dome and minarets from West Asia can be seen in different parts of our country. तो हम बच्चों देख सकते हैं कि through this contact with the land or with the oceanic contact, this ideas of culture or there was a trade between among these countries or the exchange of ideas with these countries. It was adopted from the other countries also, and our ideas also adopted by the other countries. This was all about this lecture. Meet you soon in the next class. Till then, bye.